So if I talk about interview questions, so for example, people can ask you that basic things Mm-hmm. about the Azure. Some people may ask you regarding, what is availability zone. So how you would explain that? What is the availability zone, right? So Mm-hmm. availability zone is not nothing but this is a separate data center within the, uh, you know, uh, there are different data center in the region, right? So if you go on a particular data center, so you can say that that is a separate data center within the same region. Okay, that's the availability zone. Okay. हम्म, तो लेट्स से कोई डेटा सेंटर मुंबई में है. अब मुंबई में वो जो डेटा सेंटर है, right? So in Mumbai you have one data center, but within that data center you have a three separate, building, or you can say three separate data center within the same region. Okay, Mm-hmm. so why Microsoft does that? Microsoft इसलिए करता है इसको क्योंकि हो सकता है कि एक ही लोकेशन के किसी डेटा सेंटर में प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, Mm-hmm. और उस पर्टिकुलर लोकेशन के अवेलेबिलिटी जोन पे प्रॉब्लम आ गई, सो यू वुड स्टिल एबल टू एक्सेस योर machine from different availability zone. Okay, so that's the availability zone. So people may मतलब ask you. मतलब जोन में बॉम्बे में ही सपोज आप बात कर रहे हैं तो हाँ, तीन डेटा से बॉम्बे में अलग ही. अलग अलग हाँ, तीन जगह। हाँ, बॉम्बे के अंदर ही, बॉम्बे में जो डेटा ठीक। सेंटर बना होगा उसके अंदर ही तीन अलग अलग बिल्डिंग होगी जहाँ पे आपका अवेलेबिलिटी जोन होगा. बिल्डिंग ए, बिल्डिंग बी, बिल्डिंग 3 ऐसे होंगी, ओके जो ओके कि ओके। सेपरेटली आइसोलेटेड होंगी, हम्म। तीनों के तीनों. हम्म। नाउ व्हेन यू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हो, ठीक है हम्म। ना, हम्म। तो वो जो वर्चुअल मशीन है ना, आप बनाते कहाँ हो? लेट्स से कि आपने अवेलेबिलिटी जोन 1 में बनाया, ठीक है ना, वर्चुअल मशीन, लेकिन जो उसकी कॉपी होगी, वर्चुअल मशीन की कॉपी होगी, वो अदर अवेलेबिलिटी जोन पे भी रेप्लिकेट हो जाती है, ठीक है. ओके। डिपेंड करता है कि आप वर्चुअल मशीन किस टाइप की बना रहे हो, बट जनरल जो वर्चुअल मशीन होती है वो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन पे रेप्लिकेट हो जाती हैं. हम्म। So let's say you created a virtual machine in AZ1, availability zone 1 पे आपने create किया. हम्म। Now what would happen? A three copy of that virtual machine would be there. एक availability 1 में, एक 2 में, और राइट। एक 3 में जाएंगी, right? राइट। Okay. फिर ऐसे ही कोई पूछ सकता है, what is हम्म। difference between PLB and ILB? हम्म। PLB means public load balancer हम्म। and ILB means internal load balancer. हम्म। So PLB is load balancer which can load balance the global traffic. Okay, global traffic means uh, it can be internet facing PLB. Okay, and different लोकेशन से कोई ट्रैफिक आ रहा है उसको ये लोड बैलेंस कर सकता है, PLB. हम्म। ठीक है. हम्म। और PLB में यू कैन अटैच पब्लिक आईपी, राइट. हम्म। अब ये डिपेंड करता है कि जो PLB में आप जो आईपी अटैच कर रहे हो वो आप कितने कर सकते हो. सो इट्स डिपेंड ऑन द, इसके SKU पे डिपेंड करता है कि कितने आईपी इस पे आप अटैच कर सकते हो, पब्लिक आईपी. ठीक है ना. पब्लिक आईपी हम क्यों अटैच करते हैं? So, हम फ्रंट फेसिंग के लिए अटैच करते हैं कि so the कोई ट्रैफिक उसके. हम्म. same public IP is available on the different zone, or पब्लिक आईपी आप जोन रिडंडेंट बना सकते हैं. जो आप पब्लिक आईपी चूज करोगे तो uh-huh. आप उसे ये बोल सकते हो कि जो आपका पब्लिक आईपी है वो किसी एक जोन पे ना अप्लाई होके वो किसी अदर जोन पे भी मूव कर सके. तो ग्लोबल टाइप का पब्लिक आईपी बनाओगे, सो यू कैन Oh, यूज इन अ uh-huh, uh-huh. डिफरेंट रीजन एज Different वेल. reason. Okay. या. ओके, सो PLB need to add public IP. uh, it depend on SKU.
SKU, ASQ नहीं है। हाँ, ILB जो है इंटरनल है, इंटरनेट नहीं है। PLB इंटरनेट फेसिंग है, ILB जो है इंटरनल है। So if you इधर want to load balance your internal traffic, on that case you are going to use ILB. And if you want to load balance your external traffic, okay, which हम्म, is internet traffic, so you can use PLB. ठीक। Okay. हम When any resources in a load balancer cannot be available, मतलब वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें PLB जो है वो एरर देगा कि आपका जो फ्रंट एंड है वो वर्क नहीं कर रहा है। ओके। सो हम्म, क्या क्या है, जैसे हम F5 में देखते हैं ना, F5 में आपने देखा होगा कि F5 कब नहीं लिसन करता है कोई भी क्वेरी को। ओके। हम्म, सेम आपका PLB भी कोई क्वेरी को नहीं लिसन करेगा कुछ कंडीशंस पे। फर्स्ट हम्म, कंडीशन ये है, द सॉरी, फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड should be listen on proper IP and proper port number. So you have to attach proper internal IP and enable proper port number on the front end side. That is one thing. फिर अगर उस इसके बाद भी नहीं चेक कर रहा है, मतलब ऐसा सिनेरियो दे सकते हैं इंटरव्यूअर आपको कि वो कैसे, कुछ कंडीशन बताइए कि मेरा जो लोड बैलेंसर है वो अभी वर्क नहीं कर रहा है। सो लोड बैलेंसर इज नॉट वर्किंग, सो व्हाट ऑल द थिंग्स यू आर गोइंग टू चेक। Okay, so they would get this kind of condition. So if load balancer is not working, so what all the things you would check? So load balancer नहीं काम कर रहा, सबसे पहले आप चेक करोगे कि whether it is listening on a proper IP and proper port number। ठीक है, वो चेक कर लोगे कि लोड बैलेंसर पे हमने IP सही अटैच किया है और पोर्ट नंबर फ्रंट एंड हमने सही इनेबल किया है। पोस्ट चेकिंग द फ्रंट एंड, लेट्स से कि मेरा वो लोड बैलेंसर प्रॉपर IP और प्रॉपर पोर्ट नंबर पे लिसन कर रहा है, फिर भी मेरी रिक्वेस्ट जो है डिनाई आ रही है, तो आप क्या करोगे? चेक करोगे कि मेरा लोड बैलेंसर अनहेल्दी तो नहीं दिखा रहा है। कैसे चेक करोगे? यूजिंग हेल्थ मॉनिटर। लोड बैलेंसर पे ही ऑप्शन होता है। ठीक है, तो जो हेल्थ मॉनिटर है वो देखोगे आप कि वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। मतलब जो बैकएंड पे रिसोर्सेस है, ओके, विद बैकएंड रिसोर्सेस इज up and listening on the proper port number, that you need to check। second thing, थर्ड थिंग आप चेक करोगे लोड बैलेंसिंग रूल। लोड बैलेंसिंग रूल सही लगा होना चाहिए। ठीक है ना, कि लोड बैलेंसिंग रूल में हम क्या राइट करते हैं? वी राइट यूजली that if the request is coming port number X, so it should be redirected to port number Y in a particular pool। so ये चीज़ें चेक करना है। तो थ्री थिंग यू नीड टू चेक। नंबर वन, योर फ्रंट एंड listener, then health monitor, and third load balancing rule। these three things you are going to check। अब इसमें क्या पूछा? इसमें आगे वो कंडीशन दे दिया कि चलो ठीक है, you check that and you find that your backend sorry, your health is not correct, then what you would do? health is not correct। अब हेल्थ जब करेक्ट नहीं होगी, दो ही कंडीशन होती हैं, या तो हमारा बैकएंड रिसोर्स पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे लिसन ना कर रहा हो। ओके, सो आप चेक करोगे बैकएंड रिसोर्स, वेदर द बैकएंड रिसोर्स ऑन द बैकएंड रिसोर्स पर्टिकुलर पोर्ट और सर्विस इज इनेबल्ड और नॉट। ओके, और फ्रॉम द लोड बैलेंसर टू द बैकएंड, अगर बीच में कुछ फायरवॉल है, NSG है, वो भी आप चेक कर लोगे कि लोड बैलेंसर से जो बैकएंड रिसोर्स के बीच में कोई NSG तो नहीं लगी है, कोई फायरवॉल तो नहीं लगी है। अगर लगी है तो आपको वहां भी पोर्ट अलाउ करना है। गॉट माई पॉइंट? फिर इसके बाद ये चेक करोगे ठीक है, अब बैकएंड रिसोर्स प्रॉपर सर्विस उसकी इनेबल्ड है,
फायरवॉल ओके है, ठीक है, तो आप राइट हेल्थ मॉनिटर लगाओगे। हेल्थ मॉनिटर आप राइट पोर्ट नंबर पे और राइट हेल्थ मॉनिटर में क्वेरी लगाओगे आप। ओके, तो ये यही कंडीशन होती है आपको लोड बैलेंसर पे जो इशू आते हैं। ठीक है, अब कोई पूछ इसमें से लोड बैलेंसर के अलावा और भी क्वेश्चन आते हैं हमारे। लोड बैलेंसर में और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, the machine which you have put on the load balancer, or the resources which you have put in behind the load balancer, sometime it is showing um, good services and sometime showing that services is not up, is intermittent issue आ रहा है। ठीक है, तो आप चेक करोगे कि बैक एंड हेल्थ जो है, व्हाट बैक एंड हेल्थ इज सेइंग, whether the back end health going down again and again. Okay, if health is going down and again, that means the service which is listening on the backend resource, that is getting up and down. So वो आप सर्वर साइड पे चेक कराओगे कि सर्वर साइड पे सर्विस सॉरी सर्वर साइड पे कहीं ज़्यादा लोड तो नहीं है। ओके, दैट यू नीड टू चेक। ओके, सर्वर रिसोर्सेज, सीपीयू, मेमोरी, ये सब चीज़ें चेक करोगे। जब सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड होता है ना, तो सब समटाइम्स सर्वर डज नॉट रिस्पॉन्स फॉर द क्वेरी, the query, and at that time you are going to get intermittent issue, connectivity issue. So that all things come in the troubleshooting scenario, right? Any question on this? No. Okay, now I'm moving to next. Apart from load balancer, let's talk about uh, monitoring. Okay, so sometimes the people would be saying that how you are going to monitor resources. So for example, people can ask you that you have a virtual machine and you need to monitor the health status of that virtual machine. How you are going to do that? Okay, so to monitor the health resources of that particular virtual machine, you can just use Azure Monitor. That is one thing. आप virtual machine को Azure Monitor से integrate कर दीजिए, ठीक है, and you can use that thing to monitor the Azure virtual machine. Apart from that, if you just want to monitor basic things, that what is the CPU utilization and what is the memory utilization, so simply you can go to the machine and click on the machine and you would get the overview of that. Okay, and there would be option for utilization of CPU, utilization of memory, all those things you can do. But if you just want to monitor it historically, then you need to integrate your Azure machine to the Azure monitor, right? Another question, what is the uh, security center? What is the Microsoft security center? So you can tell that the Microsoft security center is kind of a compliance and monitoring tool, using using it you can monitor the you know compliance of your Azure resources, for example virtual machine, load balancer, whatever. Okay, when I say compliance, compliance means whether the antivirus on the machine is enabled or not, whether the machine is patched or not, whether there is any vulnerability on the machine. Everything you can get from the Azure security center. All these information you can get from the Azure security center, right? Now the next question, if someone is saying that how can you deploy Azure resources, what all the things you can use to deploy the Azure resources? So number thing one, you can tell that you can deploy the Azure resources using Azure portal. Okay, other thing, you can use Azure CLI, Azure PowerShell. So you can deploy with that as well, or you can use JSON script to deploy the Azure resources. Okay,
Now the next question: whenever you are deleting the virtual machine, whether the hard disk and IP would also get deleted, associated hard disk and IP to that virtual machine. So you can say it's optional. If you want to do that, so yes, you can do that. By default, it is already enabled, but if you want to disable it, you can disable that as well. Right. There would be option Right. for the VNet peering as well. Okay. So if someone is asking for the VNet peering, like they would give you some kind of scenario for the VNet peering. For example, one scenario is like you have different location, okay, in the Azure. One VNet you have created, let's say, um, in Japan region. Other VNet you have created in US region. Another VNet you have created, I mean, complete three subscription you have, okay, in a different region. And now you just want to have the VNet pairing. What kind of the VNet pairing you just want to have? How about spoke kind of connectivity you just want to do that? Then how you are going to do the VNet pairing in that cases? So first of all, you need to determine these things, that whenever you just want to do the VNet pairing, okay, what the things you are selecting as a central location. So maybe your main data center is in US, right? And rest of the data center is not a main data center. So US data center you can make as a hub. The rest of the data center you can make as a spoke. So whenever you do the VNet pairing, do between hub and spoke, not between spoke to spoke. Always do hub and spoke kind of thing. Okay. So this is the thing. So when you, this is regarding the architecture. So when you just want to have the VNet pairing, you just do hub and spoke VNet pairing, not spoke to spoke. Okay. By the way, if people can ask whether the VNet pairing possible one way or two way, so you can say it is both option you have. If you just want to have one-way communication, you can do one-way VNet pairing, and if you just want to do two-way communication, you can do two-way VNet pairing. Okay. People can ask what is the difference between Azure Firewall and NSG as well. Okay, so you can tell that Azure Firewall is providing the, you know provide the granularity to apply the control based on the application level or application layer. However, NSG is just going to provide the controls for network and sorry, IP address and port number. That means on NSG you can apply the firewall or ACL based on IP address, okay, and port number, not as a application. But in Azure Firewall application, you can apply on the application level as well. Okay. And you can create both kind of rule in both firewall, inbound and outbound. That means any traffic which is going through resources or any traffic which is going from the resources. So for example, आपके पास एक virtual machine है, okay. If that virtual machine want to access internet, how it would be going to access internet? What you need to allow? You need to allow internet services to access to that virtual machine, and where you can allow on the NSG level. By default, outbound traffic NSG में सारा कुछ allowed होता है. Where you can apply the NSG, you can apply the NSG on subnet level or network level. Sorry, interface level. That means, let's say if you have a virtual machine, so if you want to apply the NSG, you can apply the NSG on the virtual machine's interface card or the virtual machine subnet. Wherever that virtual machine is created, on that subnet you can apply the NSG. Any question on that? No? Okay.
So I think these are the questions people ask in the interview. Also, they can ask, let's say you just want to create a VPN tunnel between Azure and Palo Alto. What kind of VPN tunnel you can create? So you would say site to site. Okay. If someone can ask if you want to Mm-hmm. create a tunnel in between um, Azure and your laptop, how you can create, Mm-hmm. what mechanism you are going to use. So you can say that is um, point to SSL. multi-point Yes, SSL, right? SSL. You can use, right. Also, you can say point to multi-point. Okay. Okay. So, I mean, this kind of VPN tunnel you can create. And people Normally can also ask basic. that. Normally, our Mhm. DCN data center to Azure cloud, we are using IPsec tunnel. Then there is no site-to-site VPN or how. If Yeah, one that of the is branch want IPsec, to right? That's a IP, IPsec. Yes, right. That's a IPsec tunnel you are going to use, and that tunnel is called site to site as well. Which So you one? can use site to site in between so Azure data center. any Mm-hmm. of any one of the branch, the user they want to communicate directly to the internet towards the internet without DCN connectivity. In that case, all the traffic it's going via IPsec tunnel to reaching the internet cloud via the Azure cloud, the Mm-hmm. URL filtering basis. Okay. Got it. Okay. Also, sometimes people can ask the question regarding the backup, that how you can take the backup of your Azure resources. So you can tell that Azure backup can be taken either using, Azure's backup software, or you can take the backup of entire data center itself, right? So that those kind of questions people can ask. M- ठीक है जी. Okay. Shall we off now? Okay. Okay. All right, Amar. Thank you Then so man. much.